ओके, स्टार्ट करते हैं। मुझे बता दो तुम पे आवाज़ आ रही है? हुसैन, आवाज़ आ रही है ना? अली, कैन यू हेयर मी? ओके, ओके, सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ। ऑल दोज हु आर अटेंडिंग राइट नाउ, दिस इज न्यू फॉर यू. Unfortunately, I couldn't do a face-to-face class today, but let's try to do this online. And if you have any questions, you can ask me later on as well. Okay. कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट्स विद द आइडिया कि जब आप ओ लेवल में कभी जो है वो सॉल्व कर रहे होते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो होता ये था कि आपके पास जो रूट्स आ रहे होते थे वो कभी कभार आ जाते थे कॉम्प्लेक्स, और वो कब आते थे? जब डिनोमिनेटर के अंदर जो है, सॉरी, रूट के अंदर जो है वो एक नेगेटिव नंबर आ जाया करता था. ओके, तो आप रख देते थे सर कॉम्प्लेक्स रूट्स. व्हाट वी विल ट्राई टू डू टुडे इज वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और जो है हम इसको फर्दर ऑपरेशन इस पे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स के बीच में क्या डिवीजन है. I will also write a lot of things. I want you to copy them down in your notebooks that you have, so that we have the notes together in one place. Complex numbers is a very long topic. It's probably going to go on for another 3 classes. Total 4 classes शायद लगेंगी complex numbers कराने के लिए. Okay. This one says, which of the following numbers, write down the following numbers in their simplest form. Now, what do I mean by simplest form? यहाँ पे एक नई notation use होगी. That's called root of -1 की जगह एक I लिखा हुआ आ जाएगा. And this is called iota. Okay, or I. Remember that this is also on your calculators. So if I show you your calculator, okay, एक तो ये mode होता है calculator का, that's called the complex mode. If you use the complex mode, it's going to show you an I on top. Okay, एक ऊपर I बना हुआ आ जाएगा. You can see that now your calculator is in complex mode. If you want to type an I, this is the ENG button. जो यहाँ पे ENG लिखा हुआ है उसको लिखते हैं तो ये I आ जाता है. सही है. अब इस I का करना क्या है वो थोड़ी देर बाद देखते हैं. Okay, all numbers in this format can be simplified and written in terms of I. सही है. So root of -9 को क्या मैं break करके कह सकता हूँ? root of 9 into root of -1, following the rules for surds. Then root of 9 becomes what? 3, and root of -1 की जगह लिख सकते हैं I. The root of -9 becomes 3i. Okay, that is the first thing that you need to know. I hope there is no confusion. If you have कोई confusion है, so please make sure that you ask me either on the chat or by opening your mic on Zoom. Okay, then messaging me right now. क्या? सॉरी, दोबारा बोलो. पेज नंबर है 213.
Okay. Right. So root of -5 can be then written as root of 5i, क्योंकि रूट ऑफ 5 को मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता. इसी तरह रूट ऑफ 18, सो ये बन जाएगा रूट ऑफ 18i, बट यू नो दैट योर कैलकुलेटर कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई सम नंबर्स. तो रूट ऑफ 18 बन जाएगा 3√2 और उसके साथ i आ जाएगा. ओके, आई होप दिस बेसिक आइडिया इज क्लियर टू एवरीबडी. अच्छा, अब ये क्या कहता है, सॉल्व द इक्वेशन इन ईच केस. हमें पता है कि ये जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें रूट स्क्वायर एक साइड पे और दूसरी साइड पे नंबर है. So instead of taking it to the left hand side and then solving, what I can simply do is I can take a root. तो मैं रूट लूंगा. सही है, अब रूट खुद से लगाया तो प्लस माइनस दोनों आना चाहिए, बट ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है. सही है, तो मैं लिखूंगा कि ये बन रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हैं. सही, ये एक बनेगा 5i और एक बनेगा -5i. तो जिस तरह रियल सॉल्यूशंस डबल डबल आया करते थे, इस तरह नॉन रियल भी दो दो ही आया करेंगे. ओके, आपके पास हमेशा दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आया करेंगे. अभी मैं इस बात को लिखूंगा भी, एंड देयर इज सम मोर थियरी दैट आई आल्सो वांट टू राइट डाउन एंड विल राइट डाउन इन अ बिट. ओके, सिमिलरली इस बी को सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, पहले पहले हम 484 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे. सो ये -484 बन गया. x² equals to -1 to 1. x is therefore equals to root of -1 to 1 प्लस माइनस. तो एक आ गया 11i और एक आ गया -11i. ओके, देन c -20. x is therefore equals to root of -20. तो x is equals to प्लस माइनस फिर से लगा देते हैं 2√5. तो इट्स आइदर 2√5i और -2√5i. ये तीन एक ही जैसे सवाल मैंने आपको करके दिखाए. ओके, एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं. Please let me know when you need time to copy or anything and I will stop and make sure that you are copying and everything. Okay, अब यहाँ से important चीज़ें शुरू होती हैं. ये कहता है solve the equation. तो ये कैसी इक्वेशन है? ये एक quadratic equation है. Okay, this is a quadratic equation. Typically how do you solve it? You factorize it. अगर मैं factors बनाने की कोशिश करूँगा तो factors बनेंगे नहीं. सही है. So what I'm going to do is directly start applying the quadratic formula. So yeah, and I'm going to leave some space here because I want to write down some notes. Okay, so A is 5, B is 14 and C is 13. So अब z है तो z equals to -b plus minus root of b square minus 4ac over 2a. So -14 plus minus 14 square minus 4 times a times c over 2 times a. Okay, I have my calculator. I'll do it here. 14 minus 20 to 60. 13 square minus 2. Getting -64. So I'm getting -14 plus minus root of -64 over 10. But yeah, of course I see now that
my equation has complex roots. Now I know how to simplify complex roots. तो ये बन जाएगा -14 plus 8i divided by 10 and -14 minus 8i divided by 10. My screen's gone. A moment. Okay. I think my screen is back now, the live stream, and it's back here as well. Okay. So then I can say that this becomes -14 divided by 10 plus 8i divided by 10 and -14 divided by 10 minus 8i divided by 10. So z is minus 1.4 plus 0.8i. I'm just simplifying it because I want to show you something here. भैया यहाँ तक हो गया. अब यहाँ पे Roman is going to come back. Okay. अब यहाँ पे important बातें. Okay. क्या important बातें कि complex numbers, I'm going to write a couple of things, so please make sure that you write them down as well. Complex numbers are often represented by the letter Z. Okay. Then complex numbers can be expressed in the form x plus yi, where x is the real part and yi is the imaginary part. तो कभी कभार सवाल जो होगा वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, या पूछेगा व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन. तो आपने कोई एक पार्ट बताना होगा. सॉल्व जाहिर सी बात है पूरा ही करना पड़ेगा, पर एट द सेम टाइम फाइनल आंसर में कोई एक चीज़ बतानी होगी. सही है. सो x इज़ द रियल पार्ट एंड y इज़ द इमेजिनरी पार्ट. इससे हमें क्या पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स. कभी कभार एक टर्मिनोलॉजी होती है जो इंटरचेंजेबली एट टाइम्स लोग यूज़ कर रहे होते हैं. Sometimes the chapter is called imaginary numbers and sometimes it's called complex numbers. Remember that imaginary numbers are a part of complex numbers. Complex numbers के अंदर real हिस्से भी होते हैं और imaginary parts भी होते हैं. But imaginary numbers का मतलब क्या होता है? Imaginary numbers का मतलब सिर्फ ये होता है. ये जो आपने पहली example पढ़ी, these were all just imaginary numbers. They had no real part in them. Okay? So that is the difference between imaginary numbers and real numbers. Okay? Clear so far? Any questions? Okay. The next point that I want to make is that complex roots always occur in pairs. Okay. One root is always the complex conjugate of the other root. For example, the complex conjugate of x plus yi
इज एक्स माइनस वाई आई। ओके, ये अब आपने बात याद रखनी है। मैंने क्या बात लिखी है? मैंने कहा है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स रूट्स आ नहीं सकते। एक केस है जिसमें आएंगे भी, उसमें उसने सवाल यही पूछा हुआ है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों नहीं है। सही है, तो हम उधर डिसाइड करेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों नहीं है। पर नाउ इट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड व्हाट इज हैपनिंग इज के एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एक जो है वो दूसरे का एक जो है वो दूसरे का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आप x प्लस वाई आई में इमेजिनरी वाले पार्ट की साइन चेंज कर दें तो वो x माइनस वाई आई आ जाता है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वन ऑफ द रूट्स वाज -1.4 प्लस 0.8 आई एंड -1.4 माइनस 0.8 आई। अब ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अक्सर आपको सिर्फ एक ही रूट बताया जाएगा, आपको फिर पूछा जाएगा कि भाई कैन यू स्टेट द अदर रूट। Yes, Aruba, that's what it is. So -1.4 is the real part of this complex number. Okay, my voice is not audible. Zoom पे आवाज नहीं आ रही? आ रही है नहीं आ रही? हाँ, आप अपने पास चेक करो बेटा प्लीज। Okay, otherwise you can go to YouTube. It's also live streaming right now. Okay, सही है। यहाँ पे एक और बात अब क्या हो गई, एक और बात मुझे यहाँ पे लिखनी है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स are represented with जी स्टार बना हुआ होता है। तो कहीं स्टार बना हुआ है, इसका मतलब क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कॉन्जुगेट निकाल के मुझे बताएं। सो ये अगर जी है तो ये इसका जी स्टार हो जाएगा। सही है, दोनों रूट्स ही हैं, फिलहाल जी की वैल्यूज हैं इसलिए मैं इसको जी स्टार अभी नहीं लिख रहा। बट कहीं क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसका बताएं मुझे। ओके, आर वी क्लियर अप टिल हियर? एनी क्वेश्चंस? अगर सबको ये बात समझ आई है, I hope you've copied. If you're copying, just let me know. हाँ, करके बताओ मुझे। बेटा स्टार जब लगेगा जब हमें कॉन्जुगेट बताना होगा। सही है, अगर x प्लस वाई आई को z कह रहे हो तो x माइनस वाई जो होगा वो z स्टार हो जाएगा। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं बताना, लेकिन अगर कहीं उसने कहा हुआ है कि आप z स्टार बताएं, वो कहीं कहीं कहेगा। सही है, आई एम गोइंग टू शो यू अ क्वेश्चन राइट नाउ वेयर इट्स टॉकिंग अबाउट w and w स्टार टुगेदर इन अ क्वेश्चन, so you know that w and w stars are conjugates of each other. Okay, I'm moving on. Okay, these are called powers of I. सही है, अब लकीली फॉर यू गाइस हम वैसे तो इनको मैन्युअली याद करना होता था, बट आपके कैलकुलेटर्स जो हैं वो आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माय कैलकुलेटर इज इन कॉम्प्लेक्स मोड, आई कैन जस्ट आस्क इट व्हाट इज I पावर 4, इट्स गोइंग टू टेल मी इट्स 1। आई कैन आस्क
probably a later power as well. मैंने कहा I power 100 बता दो. I don't know if it's going to calculate, but let's see. Yeah, it's also telling me it's 1. या फिर मैं I power से पूछ रहा हूँ 99. Okay, minus I. सही है. So what happens is कि powers of I जो है वैसे जब एडमिशन टेस्ट में एक्चुअली सवाल आते हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू ब्रीफली. ओके, उसमें क्या है कि I पावर 1 को लिखा जाता है I स्क्वायर को लिखा जाता है I स्क्वायर बिकम्स -1. उसकी वजह क्या होती है कि रूट ऑफ -1 पे आप जब स्क्वायर लगाते हैं तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ -1 रह जाता है. सही है. इसी तरह I क्यूब्ड जो होता है वो -I बनता है, और I पावर 4 जो बनता है वो 1 बनता है. यही याद करने वाली बात है. सही है कि अगर आपको याद होंगे तो कुछ एडमिशन टेस्ट के सवाल होते हैं IBA के एंड लम्स के, वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं. नास्ट के टेस्ट में भी आएगा, फास्ट के टेस्ट में भी आपको नजर आएगा, जहाँ कैलकुलेटर्स इस्तेमाल नहीं हो रहे होते हैं. ओके, सो यू विल सी दोस क्वेश्चंस देयर. आप जो है वो उनको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि भाई I पावर 99 मुझे निकालना है. अब मुझे पता है कि ये 4 होते हैं, इसके बाद ये एक रिपीटिंग पैटर्न होता है. सही है. उसकी वजह क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब मैं फेस टू फेस होऊंगा तो मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा, बट दिस इज व्हाट हैपेंस. ओके, सो द आइडिया इज के रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं. अब रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ 4 हैं, तो अगर मुझे 99 तक पहुंचना है तो मैं क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 देखता हूँ. क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है? 100 नज़र आ रहा है. सही है. 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि ये मल्टीपल्स ऑफ 4 जो होते हैं वो सारे 1 होते हैं. तो I पावर 100 भी कितना होगा? 1 होगा. I पावर 99 उससे पहले वाला है, उससे पहले क्या होना था? -I होना था. therefore I पावर 99 is -I. So it's a repeating pattern. If you understand it, that's fine. Right now you can use a calculator and get me a final answer in all of these cases. हम इन सारों को कैलकुलेटर से ही करके देख लेते हैं. I क्यूब देख लेते हैं क्या आता है. I क्यूब तो मैंने लिख दिया है, बस इसको I क्यूब को ऐसे ही लिख देते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा -I. और मैं कैलकुलेटर में I जो है वो ये ENG का बटन है. ENG के ऊपर देखो I लिखा हुआ है, लेकिन पहले तुम्हारा मोड जो होना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स मोड होना चाहिए. ये मेरा कॉम्प्लेक्स मोड है, ऊपर I लिखा हुआ आ रहा है. ओके, तो I क्यूब्ड -I पावर 4 1 I पावर 9 I -I पावर 6. हम -I पावर 6 निकाल लेते हैं. Let's see if the calculator works it out. Tells me -1 है. Okay, 2I पावर 5 2I पावर 5 82I. Okay, are we clear up till here? भाई इस तरह ये नीचे वाले सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहा, ये वैसे लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, but I am right now not going into that. I'll probably solve it when I'm doing face to face, because these are important not from the perspective of an A-level exam, but from the perspective of admission tests. Okay, they're there just to teach you some additional concepts. Here is where I start off with बेटा कॉम्प्लेक्स मोड में जाओ. अगर तुम्हारे पास पुराना वाला कैलकुलेटर है तो उसमें कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ आ रहा होगा, CMPLX लिखा हुआ आ रहा होगा. मेरे में ये 2 वाला मोड जो है वो कॉम्प्लेक्स मोड है, इसमें I बना हुआ आ रहा है. Okay, these are about operations on complex numbers. Operations कहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को. ओके, पहला वाला कहता है अब ये Z1 और Z2 दिए हुए,
तो ये आप नोटिस कर रहे हैं सब में रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो हम पहले इनको ऐसे लिख लेंगे, फिर जिस तरह हम अलजेब्रा में ऐड करते हैं उस तरह हम अलजेब्रा में की तरह ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा? 5 + 3 इज 8 प्लस 6i। Do we all agree with this? 5 + 3 is 8, 2i plus 6i is 6i। मोमिन, i पावर 9 जो है वो एरर दे रहा है। Let me check. It's not giving me an error. Okay. Okay, then subtraction है। बनेगा 5 + 2i minus 3 minus 4i। Okay, 2 minus 2i। Okay, then z1 into z2। I want you to note this carefully. Okay, and then I'm going to take a short break. Well, in fact, we'll take a short break right now, and then I'm going to teach you both multiplication and division. If you're on the stream, just keep stay there.
Okay, let's begin again. हम कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह होती है जिस तरह अलजेब्रा में होती है. ओके, you will be multiplying in the same way. Okay, तो इसमें जो है फिर पहले 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, फिर 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4i से, then you multiply 2i with 3 and then 2i with 4i. Okay, so you get 15 plus 20i plus 6i plus 8i squared. Now what do I want you to remember here? Remember that I square is always -1. I square की वैल्यू हमेशा -1 होगी. तो आप उस -1 को फिर यहाँ पे लगा दें. 8 times -1, that gives you 7 plus 26i. Does everybody understand this? Any questions? No? Then what does the last one say? It says z1 divided by z2. Okay, I want you to divide two complex numbers. Now this is very important. Please make sure that you take a note of this. Z1 plus divided by z2. Now technically you can't really divide. Long division नहीं हो सकती complex numbers के अंदर. करेंगे भी तो भी काफ़ी complicated हो जाएगी. Okay, अब यहाँ पे कहानी है क्या कि I is basically -1. जल्दी से कॉपी कर लो. Okay, so I is basically -1, root of -1. Okay, in maths we cannot leave a root in the denominator. आपका calculator भी जो है वो denominator के root को ख़त्म करता है. सही, तो आपका काम भी क्या होना चाहिए कि जो denominator में हमारे पास root आ गया है इसको मुझे जो है वो किसी तरह ख़त्म करना है. सही है, अब मैं इसको ख़त्म कैसे करूँगा ये हमें और से देखना है. ओके, अब मुझे पता है कि i तब ख़त्म होता है जब वो i स्क्वायर बन जाए. अब मुझे अगर इस डिनोमिनेटर वाले i को किसी तरह i स्क्वायर बनाना है तो मुझे इसको किसी i वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. The Zoom meeting is about to end. Please rejoin quickly. ओके, बिल्कुल यही करेंगे हम जो है वो उसको रैशनलाइज करेंगे. सही है, वी विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. व्हाट डू आई मीन बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कि जो रूट है वो एक इरैशनल नंबर है उसको मैं रैशनलाइज करूँगा. सही, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू मल्टीप्लाई okay, you multiply and divide, you multiply both the numerator and the denominator by the conjugate of the denominator.
यानी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो है वो 3+5+2i/3+4i को न्यूमरेटर को भी जो है वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना चाहिए। किसके कॉन्जुगेट से? कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर से। भाई न्यूमरेटर का कोई मसला नहीं है, न्यूमरेटर में आई आ सकता है। तो ये तो मल्टीप्लाई करेंगे 3-4i/3-4i। ओके, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। I am going to multiply both the numerator and the denominator by the conjugate of the denominator। सही है। फिर अब पहले डिनोमिनेटर को ही नोटिस कर लें, क्योंकि काम तो उसी का था कि डिनोमिनेटर ही मसला कर रहा था। अब ये है 3+4i और 3-4i। कोई अलजेब्रा याद आती है आपको जिससे ये सिंप्लीफाई डायरेक्टली हो जाए? क्या अलजेब्रा मुझे याद आएगी कि a+b और a-b सर ओ लेवल्स में सीखा था, a² - b² हो जाता है। सही है, तो ये बन जाएगा 3² - 4i²। फिर मैंने डिनोमिनेटर दोबारा लिख लिया, मैंने कहा 9 - 16i²। एंड नॉट नाउ व्हाट डू आई रिमेंबर? मल्टीप्लिकेशन में मैं कहा था कि रिमेंबर दैट, एक मिनट स्क्रीन चली गई। जस्ट अ मोमेंट, आई एम रीलोडिंग द स्क्रीन। Okay, I think you can now see my screen again. देखो, मैंने डिवीजन के बारे में ये कहा कि डिवीजन में मसला क्या है, i इज़ बेसिकली रूट ऑफ -1, वी कैन नॉट लीव अ रूट इन द डिनोमिनेटर, यानी इस i को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते। इस 3+4i में से i को मुझे ख़त्म करना है किसी तरह। अब i को ख़त्म करने का तरीका क्या है? मैंने आपको रट्टा लगवाया अभी, यू मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर? कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ 3-4 है। अभी ऊपर वाले पेजेस पे हमने कॉन्जुगेट पढ़ा था ना, कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि सिर्फ आई वाली टर्म की साइन जो है वो आप चेंज कर दें। सही है। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई भी कॉन्जुगेट से किया है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया है कॉन्जुगेट से। ओके, अभी मैं सिर्फ तुम्हें डिनोमिनेटर की सिंप्लीफिकेशन दिखा रहा हूँ। ओके, अभी देखो, पहले मुझे पूरा करने दो, एक मिनट। अब मैंने आपको पिछले पेज पे सिखाया था कि I² is always -1, so this becomes what? This becomes 25। 3+4i। अभी कॉन्जुगेट के बारे में तुमने क्या सीखा पिछले पेजेस पे? तुमने कहा फॉर एग्जाम्पल द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ x+yi इज x-yi। तो 3+4i का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3-4i होना चाहिए। ओके, तो आप देखें, क्या आपको नज़र आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर में मुझे मसला आ रहा था कि वी कैन नॉट लीव आई इन द डिनोमिनेटर या रूट इन द डिनोमिनेटर, तो वो मैंने मसला हल कर दिया आपके लिए। नीचे डिनोमिनेटर अब 25 हो गया है। सही है, 25 हो गया है। न्यूमरेटर हम करते हैं 15 - 20i + 6i - 8i²। 15 - 14i - 8 times -1। 23 - 14i। सही है, तो इसको सेपरेट करके लिखा जा सकता है 23/25 एंड -14/25i। सही है, दैट इज कॉल्ड डिविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, इट्स कॉल्ड डिविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब अगर आप अपने कैलकुलेटर पे जाएंगे ना, तो कैलकुलेटर ये सारे काम डायरेक्ट भी कर सकता है, गिवन दैट योर कैलकुलेटर इज इन कॉम्प्लेक्स मोड। ओके, 5+2i और 3+4i।
ये देखें, वही आंसर जो मैंने आपको अभी मैन्युअली करके दिखाया था। मोमिन, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है। ओके, डिवीजन वाला दोबारा रिपीट करने का क्या मतलब है? ये पूरा तुम कह रहे हो रिपीट करने को? देखो, डिवीजन जो है वो डायरेक्टली नहीं हो सकती, मैं लॉन्ग डिवीजन में जाके ले जाके डिवीजन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें कहा कि भाई अभी मसला क्या है कि आई जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। सही है, आई को जब डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए तो क्या करना चाहिए? आई को किसी तरह डिनोमिनेटर से हटाना है, और हटाने का तरीका मैंने अभी तुम्हें समझाया कि तुम क्या करो, तुम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को आई से मल्टीप्लाई कर लो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो। आई एम सॉरी, आई हैव टू कम बैक, feel like throwing out it. Okay, does everybody understand division of complex numbers now? Any questions on division now? Okay. As long as there are no questions, I will end the class here today. I am not feeling well. Teach you this in the next. Okay.
आई विल सी यू ऑन ट्यूसडे विथ और अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम कुछ रिविजन कर लेंगे एंड फिर इसके आगे जो है ना काफ़ी सारा बिल्डअप है। That's the end of the class today. Thanks.